be clear into what you, in terms of what you want from your professional life. Set your goals, 3-year goals, 4-year goals, 5-year goals, but work towards them and make sure you never stop learning. तो वो कौन सी लीडरशिप की गलतियां हैं जो आपने की हैं? You can never go on any journey without making mistakes. But जो day to day है उसमें you will find people उसको एक तरह का काम देंगे वो बहुत अच्छा करेगा, दूसरी तरह का काम देंगे वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज हर एक का स्किल सेट एप्टीट्यूड फर्क है. कुछ लोगों को नेचुरली होती है लीडरशिप, कुछ लोग बिल्ड करते हैं. मैं ये समझती हूँ कि हम माइक्रो मैनेजमेंट तब कर रहे होते हैं जब हमने हायरिंग गलत की होती है. Not necessarily. See, there are managers who like to micromanage. So talk to me about one different initiative that Engro has taken for their employees. अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? Walaikum Assalam. All good, thank you. Thank you so much for coming here. We're absolutely excited to host you. Thank you. Thank you for having me. And so we hosted you during the award show and we really loved your video, which was of 2-3 minutes hardly. तो इतना टाइम ही नहीं मिला, तो हमने सोचा कि ज़ीशान साहब के साथ 1 घंटे का पॉडकास्ट तो बनता ही बनता है. और you. क्योंकि उस दिन लीडरशिप पे बात हो रही थी, तो we realized we can record a full podcast about a lot much about leadership. We have been recording HR podcast जो कि generally young professionals के लिए होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं उनके इंटरव्यू में क्या ब्लंडर्स हो रहे हैं, CV में वो क्या ब्लंडर्स करते हैं, ओवरऑल कॉर्पोरेट लाइफ में वो क्या गलतियां कर रहे होते हैं. तो उस पर हमने बात की है, जिसको हम टच बेस भी करेंगे, पर लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है. तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद योर ब्लंडर्स ड्यूरिंग योर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ लीडर. तो वो कौन सी लीडरशिप की गलतियां हैं जो आपने की हैं और आज अगर हम डिस्कस करते हैं तो बहुत लोग उससे सीख सकते हैं. Also, you have to tell me a story. You have to tell me stories. ये तो गूगली फेंक दिया आपने. देखिए, you can never go on any journey without making mistakes. So I think I would prefer to call them mistakes than blunders. Blunders make them sound a lot worse. I'm sure I've made a lot of mistakes. I think some bad choices. But I think the important thing is that you should always learn from them and move on. So if I think back, the biggest blunder. I think I misjudged my supervisor once. I was working for my first company. It was ISA Paints at the time. And I remember I was in sales at that time. I was a sales manager for Lahore, and we were selling Dulux paints. And I very new into the role. And my boss, because the business was based in Lahore, so he was sitting right next to me in the room next to me. I had this budget where I could put up shop boards. You know, आप Dulux के shop board लगाते हैं paint shops पे and everything. And I had a decent budget for it because obviously marketing जो above the line तो marketing department करता है, but below the line सारा हमारे पास होता था, because you would handle architects, you would handle painters, you would handle shops, you would handle distributors. So there's something for everyone in the whole. But I remember the first time I joined, and whenever I would try to buy a shop board or some point of sale material, you know, there was a standard process of, you know, evaluating quotes and everything. And whenever it would go to my boss, he would call me in every small thing and grill me over it. Why this? Why not that? And I said, "Yaar, kya galti ho gayi hai mujhse?" For 3 months, this carried on. And I think the good thing is that I had that relationship with him where there was a lot of trust. So I never doubted him. 3 months later, it suddenly stopped. So what happened? What happened? I mean, everything I send now is just approved and it goes back. Reject हो रही है? नहीं, approve हो रही है. अच्छा, approve हो रही Approve है? होके वापस आ रही है. Oh. I said, something's changed. And I looked to myself, I said, I haven't changed anything. So I went to him, I said, 3 महीने तो आपने मेरी खूब क्लास ली है, तो what happened now? He said, अब तो सीख गया. So it wasn't a mistake in the sense, but I think it's a misperception on my part, that maybe he was not trusting me or anything. And he said, "This is the first time you're doing this, so I had to teach you. Now you know, and you're on your own. Now I don't need to look at anything from that comes from me because I know you've gone through the process." So it's a learning.
it's always a learning, and um, it also tells at least me that don't jump to conclusions and don't Yeah. assume anything till you know course. better. When I hired interns and I was telling them to go for copywriting for LinkedIn specifically, so every caption they used to send me तो वो रिजेक्ट कर दी मैं, फिर कैप्शन आता है रिजेक्ट कर, फिर कैप्शन रिजेक्ट कर दी, फिक्स किया, फिर भेजा फिक्स, अब मुझे शुरू में फिक्स करना पड़ा. तो there was a time after 4 weeks that she was sending me the captions. I was like okay सारे captions okay. तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई कि क्या आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, क्या आप मुझे सिखाना ही नहीं चाहती, आप हर बात पे ओके क्यों बोल रही हैं. दिस हैपेंड ट्वाइस. बोथ ऑफ द इंटर्न्स वर लाइक कि ये रिजेक्शन क्यों नहीं आ रही है. लाइक घर में जब लोड शेडिंग होती है तो सब नॉर्मल रहते हैं, लोड शेडिंग नहीं होती तो क्यों नहीं हुई है. वो वाला हिसाब है. बट ऑब्वियसली दे लर्नड थ्रू दैट प्रोसेस. तो वो रिजेक्शंस भी हेल्प करते हैं. आई वांट टू नो द लीडरशिप ब्लंडर्स दैट यू डिड. सो दिस इज लाइक ऑन द अदर पर्सन's पार्ट जो आपने I think it was on my part in the sense that I had created an incorrect perception in my head, and didn't trust the process. Blunders तो बहुत सारे हैं, छोटे बड़े हर तरह के हैं. Depends on what you're looking for. Many a times I've have sort of in my enthusiasm raced ahead on something without taking my boss on board. Then I had to come back and say, "Oops, excuse me, sorry, I didn't forgot to take you on board. I've done this." And but to my several bosses' credit, in 99.9% of the cases, they've given me a bit of feedback, but generally always supported me. So, alhamdulillah, I has think. some of your juniors given you any form of feedback कि यार maybe you're rude sometimes, you micromanage sometimes. तो जो आपके नीचे लोग हैं जो आपको रिपोर्ट करते हैं, क्या उन्होंने फीडबैक दिया? I have a habit of हमारे यहाँ मिड ईयर्स होते हैं, अराउंड जून टाइम के एंड पे शुरू होते हैं. तो ऑब्वियसली मुझे तो करने होते हैं और अपना करवाना होता है. बट व्हाट आई आल्सो डू इज एट ये एंड ऑफ द ईयर भी आता है हमारा 360 होता है जिसमें आपके रिपोर्ट्स भी आपको फीडबैक देते हैं. तो एक फॉर्मेट पे होता है. बट मीड ईयर में मैं क्या करता हूँ, मैं उनको साथ बिठाता हूँ बारी बारी, कहता हूँ गिव मी फीडबैक. माइक्रो मैनेज का कभी नहीं आया बिकॉज आई टेंड टू गिव अ लॉट ऑफ हेडरूम. बट जो एक फीडबैक बार बार आता है वो कहता है वो ये है कि यार आप इतने पैनिक सिचुएशन में, प्रेशर में भी, हाउ डू यू कीप काम, बिकॉज यू कीप काम एंड सडनली वी स्टार्ट वरी कि यार ये क्या होने वाला है, ये को फटने वाले तो नहीं है. या no credit, I think it's just genetic. I mean, I've been like that always. I don't panic under pressure. So they sometimes feel कि maybe वो सही नहीं हमें मुझे बता सके या gravity of the situation नहीं समझा सके. But they've gotten used to it. So they used to worry कि हम कभी कभी घबरा जाते हैं कि यार you don't react, you don't start screaming and shouting or whatever. And you also said you don't micromanage. How come is this true that you don't micromanage? I mean, in your leadership journey, ऐसे times होते होंगे ना, you might feel like कि नहीं यार मुझे ही घुसना पड़ेगा इस काम में, तो कर जाता है इंसान माइक्रोमैनेज नहीं? देखिए आई वेंट टू अ कोर्स, ICA ने भेजा था एक ऑक्सफोर्ड में, जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट ने बैठ के ना हमें एक असेसमेंट की, एक सिमुलेशन रन की और उसमें एक असेसमेंट की और फिर एक नई सिमुलेशन बनाई अंडर प्रेशर, उसमें फिर दोबारा वो टेस्ट किया. दोनों के रिजल्ट्स बड़े फर्क थे. तो अमंग अदर्स एवरीबडी वांटेड टू नो कि फ़र्क क्यों है. तो आई सैट विद हिम एंड आई सेड कि फॉर एग्जांपल ट्रस्ट के एलिमेंट पे, इन द फर्स्ट इंस्टेंस आई वाज वेरी ट्रस्टिंग ऑफ माय टीम या व्हाटएवर जो भी सिमुलेशन थी. In the second, it was different. I said, how do you explain this? This guy was a psychologist, काफ़ी expert था, मुझे उसका नाम नहीं याद है. He said, देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो by default trust करते हैं और एक जो by default trust नहीं करते. There is no third option. सही है. जो ट्रस्ट नहीं करते उनको आपको शुरू से ट्रस्ट अर्न करना पड़ता है. जो by default ट्रस्ट करते हैं उनका ट्रस्ट अगर लूज कर जाओ तो फिर बिल्डअप होने में बहुत टाइम लगता. ही सेड यू आर वन द फर्स्ट. कि जो सेकंड सिमुलेशन थी उसमें योर व्हाटएवर रोल आई वाज प्लेइंग वाज द रोल वेयर आई लॉस्ट ट्रस्ट इन हूएवर वाज वर्किंग.
so that trust level dropped. So ये जनरली भी इसी तरह होता है कि जो लोग बाय डिफ़ॉल्ट पैनिक नहीं करते, वो ये बात नहीं है कि परेशान नहीं होते, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट आई थिंक फॉर अ लीडर टू keep control of the situation, and you can't keep control of the situation if you're shouting and screaming or being very aggressive. हमारी मैनेजमेंट प्रिंसिपल में जनरली भी आप देखें, we want people to be assertive, not aggressive, but you keep using the word aggressive, उससे एक बड़ी misconception create हो जाती है कि कोई उठ के बहुत इमोशनल होके चीज़ को टैकल कर रहा है, चैलेंज अननेसेसरली कर रहा है, उसको हम पॉजिटिव लेना शुरू कर देते हैं. इट्स नॉट पॉजिटिव. You need to be assertive. You need to get your point across. You don't need to lose your cool doing that. And I think, it's not just about leadership also. So let's say आपने कहा कि आप मैं ये समझती हूँ कि हम माइक्रो मैनेजमेंट तब कर रहे होते हैं जब हमने हायरिंग गलत की होती है. अगर आप अच्छे बंदा हायर कर रहे हैं तो फिर तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए, एम्पावर भी करना चाहिए, स्पेस भी देनी चाहिए. पर अगर आपको माइक्रो मैनेज करना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद द हायरिंग, राइट? इज इट ट्रू? Not necessarily. You see, there are managers who like to micromanage, who want to know everything, who want to know everything step by step. And in some cases that style works. Because, for example, if you're putting up if you're a technical person and you're putting up a multi-billion-dollar project, you have to micromanage. You're not micromanaging in that sense, but you need to get into the nitty-gritty. Your delivery kab aayegi, because everything is aligned. So in some cases it helps. But generally, as a leadership style, micromanagement leads to people who working for you, जिनको आप micromanage कर रहे हैं, वो सीखना छोड़ देते हैं. वो अकाउंटेबिलिटी लेना छोड़ देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ देते हैं. कहते हैं यार ये है ना, ये देख लेगा. वो फिर आपके पास काम भी है ना, वो आधा करके लाते हैं कि यार ये खुद ही देख लेगा. See? So the trick is that you create milestones, but you say, okay, go back and do it. And there are still times when you have to micromanage. Micromanage मैं उसे नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा अगर किसी कोई आया है और उससे एक चीज़ हैंडल नहीं हो रही, so then I get into it. I say, okay, fine, where are you faltering? But उसका पर्सपेक्टिव होना चाहिए to help that person learn, not कि आप उसको you talk down to them, or you have to realize अगर मैं 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद यहाँ आया हूँ, तो अगर कोई मेरे पास 15 साल के एक्सपीरियंस वाला है, आई शुडंट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम हिम और हर. हमारी रियलिस्टिक होनी चाहिए ना एक्सपेक्टेशंस. सो इफ दे आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट, द ट्रिक इज कि उस वक्त आप उसको थोड़ा सा गाइड करके, घुस के डिटेल्स में घुस के उसको आप गाइड कर लें एंड हेल्प देम अलोंग द पाथ. The success criteria is that next time around, if such an exercise comes, can they handle on their own or not? हायरिंग तो एक इनिशियल वो कट है ना, और एंड ऑब्वियसली 100% ऑफ हायरिंग कांट बी राइट, बट जो डे टू डे है उसमें यू विल फाइंड पीपल उसको एक तरह का काम देंगे, वो बहुत अच्छा करेगा, दूसरी तरह का काम देंगे, वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज हर एक का स्किल सेट एप्टीट्यूड फर्क है. सम पीपल, जैसे हम कहते हैं बॉर्न लीडर्स, कुछ लोगों को नेचुरली होती है लीडरशिप, कुछ लोग बिल्ड करते हैं. जो बिल्ड करते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. जिन people who are born with it, they take it for granted. They take it for granted. But also talk to me about hiring. आपने hiring का जिक्र छेड़ा है. There are people who are able to sell themselves really well during the interview, and sometimes even after the interview, during the probation also, they might sell you ये, and you find this very late, क्योंकि interview में तो आप कितना बैठेंगे, 30 मिनट बैठेंगे, 50 मिनट बैठेंगे. And there are people who are unable to sell themselves, who are unable to be very, very confident and communicate it well. But then they might deliver a lot much more value than the person who's selling him or herself out. Also, I've seen this कि काम में जो है ना mediocrity हो, या काम में कोई excellence chase कर रहा है, ये interview से नहीं पता लगता, या तो मुझे पता नहीं लगता, मैं ही experience ही नहीं है मुझे. But you have to tell me, can you judge somebody during the interview कि यार ये आगे मुझे excellence deliver करेगा? Because I've seen people who are really good with selling themselves, and then they don't deliver excellence. They produce mediocre work and sometimes below mediocre. तो आप कैसे जज करते हैं? देखिए, इंटरव्यू में जनरली फ्रॉम अ लीडरशिप एंगल, देखिए, जो एक चीज़ तो ये समझ लें कि जो स्किल्स हैं ना, वो आप सिखा सकते हैं.
जो ज़्यादा मुश्किल चीज़ है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। वो आप सिखा नहीं सकते या ओवरनाइट डेवलप नहीं कर सकते। देखिए अगर एक मेरे पास एक आई डोंट नो सेल्स का बंदा आता है और उसको मैंने हायर कर लिया है एंड उसकी मे बी निगोशिएटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं उसे ट्रेन कर लूँगा, मैं उसको किसी सीनियर के साथ लगा दूँगा, किसी तरह कर लूँगा। लेकिन उसकी जो ईक्यू है, वो उस पे मैं बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट कर सकता हूँ। And for a leader, that emotional intelligence is extremely important. और आज के unfortunately in this day and age, it's become more important somehow, because what we do is in interviews is we test both things. एक तो देखिए आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपका स्किल सेट होना चाहिए। अब वो स्किल सेट तो आप टेस्ट कर लेते हैं, दैट्स द इजी पार्ट। हाँ ठीक है ना, आप टेस्ट कर लेते हैं कि ये मे बी कॉम्पेंसेशन का बंदा है, तो यू आस्क देम यार आपने किसके साथ काम किया है, किस तरह काम किया, कोई प्रोजेक्ट बताएं, उसकी डिटेल 2-3 पूछिए, आपको समझ आ जाती है कि ये बंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता। जो टफर पार्ट है और जिसमें आपको बहुत समटाइम्स कुछ पर्सनल किस्म के सवाल करने पड़ते हैं कि अच्छा, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू पुट अ राइडर इन कि यार इफ यू डोंट वांट टू से इट फाइन, दैट्स फाइन, इफ यू डोंट वांट टू कोट एनी एग्जांपल और व्हाटएवर, यू टेस्ट द ईक्यू पार्ट। कैसे कि कैसे कैसे जज कर बड़ा मुश्किल काम है। I usually lead by saying, give me an example in your life where you felt under pressure. ओके I want to understand how you manage that pressure. Okay. And give me a professional example and give me a personal example. सही है And I qualify that, a personal example that you're comfortable to share. मतलब I don't force them to share anything. थोड़ा तो बहुत कैसी कैसी एग्जांपल्स होंगी इमोशनल इंटेलिजेंस जिससे पता चलती हो होता है क्या है कि जब आप उसमें फर्दर डिटेल पे जाते हैं, व्हेन दैट द इंटरव्यू गिव्स यू दैट दोज एग्जांपल्स एंड यू स्टार्ट आस्किंग ओके व्हाट हैपेंड, हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड यू रिएक्ट, उधर से आपको पता चल जाता है कि then they threadbare themselves into how they coped with it, how they're doing, and the emotional state during that interview tells you how they're coping with it. If the EQ quotient is unfortunately low, वो इंटरव्यू में नजर आ जाता है। थोड़ा सा और समझते हैं इसको फॉर एग्जांपल अगर कोई देख रहा है और वो बेचारा इम्प्रूव करना चाह रहा है और वो किसी इंटरव्यू में अपियर ये होता है इम्प्रूव, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हाँ EQ इम्प्रूव करने की बात हो रही है या इंटरव्यू में परफॉर्म करने की बात हो रही है? अच्छा दो फर्क परफॉर्म चीजें करना हैं। सिखा दें पहले परफॉर्म करना फेक इट टिल यू मेक इट फेक इट टिल यू मेक इट, ये होता है। मतलब अब जैसे आपने मुझसे पूछा मुझे अचानक से तो कोई एग्जांपल ही नहीं याद आ रही कैसे बताऊं मैं कोई स्टोरी देखिए मेरे साथ हुआ है अभी रिसेंटली, आई इंटरव्यूड समबडी एंड आई थॉट दे वर ग्रेट, बट व्हेन दैट पर्सन वेंट टू माय बॉस हु इज अ लॉट बेटर एट इंटरव्यूइंग, उन्होंने उसका ऐसा 1.5 घंटे का इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा नहीं यार ये तो दिस पर्सन इज नॉट स्टेबल, his reaction, we can't predict that in a stressful situation given his what position he's aiming for, how he will react. हाँ He will not be able to manage. हाँ I was totally blindsided. That's why you have a series of interviews, different Okay. people, different perspectives. ओके और एटलीस्ट एंग्रो में हमारा ये है कि हम पैनल इंटरव्यू नहीं करते, हम अच्छा इंडिविजुअल इंटरव्यूज करते हैं। अच्छा ओके उससे प्रोसेस हमारा थोड़ा लंबा होता है, but what it does is everybody does it their way and forms their own opinion and then it's collated. It's a difficult, it's a more difficult process ठीक है because हमारा ये भी है कि अगर किसी एक ने भी रिजेक्ट कर दिया ना तो then the process is closed. So it's not कि अच्छा चलो एंग्रो में पास होने के लिए कितने इंटरव्यूज लगते हैं मिनिमम जब मैं पहली दफ़ा हायर हुआ था तो मेरे हुए थे 4 इंटरव्यू हुए थे। और 4 हाँ, interviews। जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त उन्होंने 2 दफ़ा इंटरव्यू किया था मुझे। जो लेकिन वो तो सी लेवल इंटरव्यू है ना हाँ सी लेवल एमटी वगैरह के लिए तो इतने नहीं लगते होंगे नहीं, एमटी के लिए तो बेसिकली वो एक हमारा टैलेंट इनेबलर्स प्रोग्राम अच्छा, है अच्छा। जिसमें पूरी हम कुछ यूनिवर्सिटीज में जाते भी हैं, बाकी ओपन एंडेड होता है, पीपल अराइव, देयर इज एन असेसमेंट सेंटर, उसके थ्रू जाते हैं, उसका पूरा उसमें पैनल होता है बिकॉज उसमें लार्जली हम इंजीनियर्स हायर करते हैं। हमारा जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें ऑलमोस्ट 60-70% इंजीनियर्स होते हैं। तो इंजीनियर्स के लिए टेक्निकल स्किल और बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, तो इसलिए देयर इज़ अ वेरी एक्सट्रीमली थरो प्रोसेस जहाँ पे वो 2 या 3 इंजीनियर्स सीनियर बैठ के उसकी स्किल लेवल असेस करते हैं। तो आप सीपीओ हैं तो एचआर की हेड पोजीशंस मल्टीपल है हमारा स्ट्रक्चर इस तरह है कि जो सीपीओ है वो ग्रुप लेवल पे है, सो देयर आर हेड्स ऑफ एचआर इन एवरी बिजनेस दैट वी रन and so they each have their structure, but we currently have a centralized structure
where Engrocorp, which is the holding company for all these businesses, हर चीज़ उधर आके सेंट्रलाइज होती है. अच्छा, तो आप क्या स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से हायर करते हैं, क्योंकि हमारा तो कभी नहीं हुआ. नहीं, ना हमारा आपके ये होता है टेस्ट. कि हिस्टोरिकली जहाँ से ज़्यादा लोग हमारे पास आते हैं, हाँ. हम उधर अपनी फिजिकल प्रेजेंस ज़रूर दिखाते हैं, या ठीक है. करियर फेयर्स जहाँ होते हैं, बट the applications are open to everybody. And actually I would a recent experience, जो last year का management trainee batch था, once they were in for after 3 months, this is Gen Z, and I had a session with them, about 12-13 लोग, just a check in, how's it going, what's up. And from some of them I started getting a wish list. Okay, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए. Things like, I mean, we have a very flexible work Environment. time environment, but they said नहीं, और flexible होनी चाहिए, you know, it should be deliverables, I should be able to wear jeans at work every day, you know, इस तरह की चीज़ें. And there was one lot which was more focused on कि मेरा career कैसा होगा, क्या होगा. And I'm sorry to say, not to knock anybody down, the ones who had a wish list were actually from the premier universities, and the ones who were focused on building their career were not from tier 1 universities. They had more drive. Yay! I So- tell everybody, a lot of people when I talk to them, sorry मैं बीच में कट कर रही हूँ, नहीं, यार जो हंग्री लोग होते हैं ना, हम्म, वो मिलते ही उसी लॉट से हैं. एंड अगर मेरे जो भी आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, चाहे वो इंटर्नशिप की हो या वो कोई फुल टाइम नौकरी हो, अगर वो उसको वैल्यू ही नहीं कर रहा ना, तो वो उतनी एफर्ट नहीं लगाएगा, बिकॉज दे हैव दिस सेंस ऑफ प्रिविलेज. ठीक है, और फिर डिमांड्स भी आ रही होती हैं, चलो डिमांड्स आ रही हैं तो तुम डिलीवर भी करो, फिर वैसा तुम डिलीवरी भी तुम्हारी मीडियोकर है, तो फिर ये सेंस ऑफ प्रिविलेज तो आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है. बिल्कुल, exactly. Right. So my message to them was very clear. I said, look, at least for 2 years, हाँ. you are only a cost center for me. हाँ. You know, you're learning on the job. You're not Yeah. really delivering. Yeah. You tell me in these 2 years and onwards, what is the value you bring to the table, and then let's talk about your wish list. उसके बाद कोई नहीं आया वापस मेरे पास अभी तक. अच्छा. साल हो गया, अभी तक कोई नहीं And आया also, what वापस. about the performance? Performance for the trainees? Yeah, have you seen the difference in the performance? I think the performance जो है ना वो बहुत डिपेंड करती है कि आपको किसके साथ लगाया है, कि who is the manager, Oh, are they able to get very important. get the work out of you. And if I have a team, I have a team of 5 people reporting to me, they're not all the same, they are not all at the same performance level. I need to, as a leader, it's my job to understand who's best at what and get them to do that. So focus on the strengths rather than on the improvement areas, as we say. अच्छा, ठीक है. क्योंकि हिस्टोरिकली हम कहते हैं ना यार ये इम्प्रूवमेंट एरिया है, इसको बेहतर करना है. चक्कर ये है कि उस पर एफर्ट, उसको थोड़ा सा बेहतर करने में बहुत एफर्ट लगती है, लेकिन आप स्ट्रेंथ को लेवरेज करें तो वो रिटर्न बहुत ज़्यादा है. Very तो यू important. फोकस ऑन द स्ट्रेंथ. ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट एरिया अगर कोई एथिकल या उसके इश्यूज में आता है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई एम जनरली सेइंग if somebody is good at numbers, you know, in HR, then it should be in rewards. Should be calculating stuff, creating scenarios. If somebody is good at stakeholder management, तो उसको HR business partner होना चाहिए. उसको मैं rewards में डाल दूंगा तो it's like a fish out of water. But there are people, there are people who can do multiple things or do well. So ऐसे लोग भी होते हैं. Which ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं. ऐसे लोग ज़रा मुश्किल से. Because when I was hiring for Hustle, हमारा तो छोटू सा बिजनेस है, ठीक है, अब टीम भी छोटी है, तो अगर मुझे किसी को हायर करना है तो मैं किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं हायर कर सकती हूँ. और अगर लेट्स से मैं टेस्ट कर रही हूँ इंटर्नशिप पे भी, आई कांट हायर समबडी इन द बेसिस ऑफ कि यार ये इस चीज़ में अच्छा है या अच्छी है. आई हैव टू लुक फॉर समबडी जो 4-5 चीज़ें बहुत अच्छे से करा, बिकॉज बजट नहीं है ना. Exactly. You can't have 50 people doing 50 Yeah. things. You need to have Yeah. 10 people और doing मुझे 5 उसमें things. ऐसा लगता है कि अगर आप एक्सीलेंस चेस कर रहे हैं तो फिर आप बाकी चीज़ों में भी कर देंगे. सो फॉर एग्जांपल देयर आर पीपल हु आर स्लो, they might not deliver quantity, but they are good with chasing excellence. तो अगर वो दिन में 5 की जगह 3 काम आपको करके दे रहे हैं, but they understand कि यार मुझे इसमें जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ बहुत अच्छे से करूँ, तो आई फील ऐसे लोग लंबा टिकते हैं. ये स्पेशलिस्ट होते हैं. जैसे रिसर्च जॉब्स होती है ना, जैसे उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं जो हाई एंड इंडिविजुअल परफॉर्मर्स होते हैं. हाँ. ये टिपिकली लीडर्स नहीं होते जो फंक्शनल स्पेशलिस्ट बन जाते हैं.
लैब का एग्जांपल है, कोई रिसर्च फैसिलिटी में कोई किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर रहा है, तो दैट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग. So they're very good at that one thing. They're brilliant at it. But जो general leaders होते हैं, they are not brilliant but good at a lot of things. In some cases they may be brilliant at one or two, but generally on different competencies they are good at many things. Yeah. तो वो फर्क होता है. अब अगर एटलीस्ट मेरे टाइम के I have a cousin. I mean he was about my age, extremely intelligent, always a top performer. दुनिया में जहाँ गया, यूएस में से पढ़ के आया, पीएचडी कर ली. ही वॉज ऑलवेज एट द टॉप ऑफ हिज क्लास, एट द टॉप ऑफ हिज गेम. किसी टॉपिक पे आप उससे बात कर ले, ही वुड हैव द नॉलेज. पीपल स्किल्स जीरो. You know, so there's a trade-off. There's some people who are brilliant at one thing, but leaders have to be good at a lot of things. They may be brilliant on one or two of them, but they have to be good at a lot of things. Otherwise, you can't be a leader. वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हमने सिचुएशन डिस्कस नहीं की EQ से रिलेटेड, क्योंकि वो मुझे आई नहीं थी. मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी सिचुएशन बताऊं, लेकिन हम ये जरूर डिस्कस कर सकते हैं. व्हाट आर द साइंस ऑफ हाई EQ? Science of हाई EQ okay. बताएं. I think EQ तो by definition science नहीं. I mean there are ways to measure EQ. If you do some tests and whatever, कुछ आते हैं, टेस्ट हैं, but इंटरव्यू में नहीं होता. सिचुएशन आपको बता रहा होता है ना. देखिए, इंटरव्यू आप तो सिर्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग का टेस्ट लेते हैं ना, बाकी तो सारे इंटरव्यू से थ्रू हायर होते हैं. वो टेस्ट तो नहीं होता, तो उनको आपको इंटरव्यू में ही जज करना होता है. वही कह रही हूँ कि अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं और आपने कहा कि सिचुएशन बताओ और मैं आप सिचुएशन से जज करेंगे, राइट? तो क्या चीजें आप पकड़ते हैं कि नहीं, इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं है, इसने ऐसा रिएक्ट कर दिया था? वो 80% ऑफ द टाइम वो वही सिचुएशन बताते हुए रिएक्ट कर जाता है. मतलब यू कैन सी द इमोशन देयर. I won't state any names, but there was one person that we were hiring who came across as, in our first interview, came across as very confident, very learned, and this was for a communications role. Got through the first interview. When the person came into the second interview, I don't want to sound stereotypical, but they had dyed their hair blonde, which sort of seemed odd. And then we said, okay, fine. It seemed odd, coming in and suddenly they were blonde and something's not right. What happened? Anyway, when we sat in that interview, then we really went through the person's emotional element. We checked, we asked for, what are the challenges at home, what he or she need to manage, etc. जब वो बात खुली तो पता चला came from unfortunately from a broken home, etc. And obviously that had taken a toll. Now we needed to, अब बड़ा difficult situation हो जाती है. We needed to then decide कि यार should we give the benefit of the doubt or should we look at the organization and prioritize? I think our priority and our responsibility is first to the organization. So you see the candidates you have, and they are different capabilities or lack thereof, and you take a call on which person needs to go. So tell me about the employees or people who are great performers but have bad attitude. How do you handle that? एक बड़ा what you might call a perennial problem है management में, and companies that tolerate bad attitude need to then tolerate the toxic culture it brings. I'm glad to say the current organization that I'm working for, जब हम किसी को annually review करते हैं, 50% is what you were supposed to deliver, targets, etc. But 50% is how you did it. And I think that's extremely important. And when we're talking about, एक तो high performers होते हैं, एक high potentials भी होते हैं, which are people you think will become leaders in this organization. वहाँ पे the how part जो हमारा है वो बहुत important हो जाता है. इनफैक्ट उसका इस नॉर्मल एनुअल में तो वेटेज 50-50 है, बट जब आप
फ्यूचर पोटेंशियल की बात करते हैं तो उसका वेटेज ज़्यादा होता है, इनफैक्ट उसी की रेटिंग कंसिडर होती है. सो हाउ यू डिलीवर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. आप बैड एटीट्यूड के साथ करते हैं, दैट गेट्स कॉल्ड आउट. हमारा जो 360 होता है एनुअल अप्रेजल साइकिल में, फॉर एग्जांपल मेरा होगा तो मेरे जितने रिपोर्ट्स हैं वो एनोनमसली मेरा भरेंगे, मेरे पीयर्स मेरा भरेंगे, ऑब्वियसली मेरे सीनियर्स मेरा भरेंगे, बॉस मेरा भरेगा. और वो सारा मेरे पास नहीं आता, मेरे बॉस के पास जाता. He or she, whoever that my boss is, would go through it, and assuming that they know me very well, they would know कि इसमें कुछ filter करने वाला है या this is on point. And if it's on point, then they'll give you this feedback. They'll give me that feedback. I'll share very honestly. I mean, in my last feedback, एक चीज़ जो मुझे point out हुई, क्या हुई कि you're always very composed, but that starts to give an impression that you're laid back. And he said, I know you're not laid back, but that perception needs to be managed. Ab how to manage it, that's a different story. I still need to work that out. But when you don't react or sometimes get emotional or whatever, people think you're laid back. I mean, obviously, that battle inside or that stress is there, but if you seem stressful to your team, then your team loses hope as well. So they need to see that at least you as a leader have got things together, that you will always there to support or help and make sure that we get out of this. Last year, I think, what were we doing? There was some change. We entirely reviewed the entire comp structure of all our employees, and we made massive changes. ठीक है. उस changes के करने में in one of the businesses, one person was making, because every business had to do their own and bring it up to us, and the person, she made a mistake. She made a mistake. Okay. 2 लोगों की या 4 लोगों की कैलकुलेशन गलत हो गई. ठीक है. एंड शी पैनिक्ड, क्योंकि वो पेरोल को चला गया था. और वो यूजली अगर आपने कम कैलकुलेट किया हो तो मसला नहीं होता, ज़्यादा हो तो मसला होता है, बिकॉज देन यू हैव टू रिकवर इट. Started crying, came to me to her boss, and I said, hang on, nothing's lost. And I said, you could have just gone back to the operations team and said कि ये ठीक कर दो. You came all the way up to me. Why? I said, because I need to be honest. I need to own this, because it's my mistake. She was appreciated for that, to the extent that our chairman called her in and said, I want to meet this girl. If I had started taking her to task for it, it would have had a negative effect. She would never have had the courage to come up and own her mistakes. So अगर गलती होती है, गलती सबसे होती है. It's not कि there are people who don't make mistakes. Everybody makes mistakes. I make mistakes. My bosses make mistakes. So अगर किसी गलती हो जाती है तो we should be tolerant enough to say, okay, fine, हो गई. Let's see how we recover from this. Of course. The focus should be on that, rather than के okay, fine. Why did you make this mistake? What happened? Etc. Etc. Insult कर No, रहे हैं. it's not a blame game. Yeah. So if somebody comes up and is honest with you, and this is the how part, Yeah. you should always appreciate it, Yeah. and not react to it. But also I'll go back to that point where you said कि उससे toxicity बढ़ती है ना. तो अगर कोई बहुत अच्छा performer है पर उसका attitude problem है, even on junior level and खास तौर पे on senior level, क्योंकि आप leader हैं, आपके under team है, you might be very good with what you do, but you're not a good leader. Eventually you have to lead 6 people team or 7 people team, and then you drain everybody, or maybe उनके energy impact हो रही है. तो what should an ideal organization do in such case where they realize, पहले तो होता ही है कि पता भी नहीं चलता ना organizations को, juniors आके बोलेंगे नहीं कभी, और HR उस हिसाब से सख्ती करेगा नहीं कि चेक करे. तो अगर लेट्स से पता चल जाता है, अव्वल तो पता चलने के लिए भी क्या करना होता है ये भी बताएं, और जो HR के लोग देख रहे हैं, और दूसरा अगर पता चल जाए तो फिर are they supposed to take strict actions, या बस communicate करके छोड़ दिया?
What do they do? I think you Ideal have to be organization. very clear that you will not tolerate. I've worked for 5-6 different companies, and everybody had, and Alhamdulillah, almost all of them had zero tolerance for such behavior. जैसे मैंने अभी आपको बताया, the 360 is confidential. All your reports fill it, and they can be as honest as they want because I'll never find out who said what. It's only my boss who knows who said what, and it's their uh, um, chance to be heard. Other than going up to anybody at any point, and in our organization, I'm very. शुरू में मुझे इतनी थोड़ी bother करती थी, but anybody can go into any room and anybody. There's no hierarchy in that context, and we've worked very hard at that. I remember when I first joined Engro, तो मुझसे लोग पूछते थे कि यार तुमने आईसीआई के साथ काम किया था, अब तुम एंग्रो में हो, फ़र्क क्या है? तो मैं कहता था यार मुझे हार्डली कोई फ़र्क लगा, मुझे लगता है जैसे मैं उसी तरह की एक कंपनी में आ गया हूँ, सिर्फ एक चीज़ है जो डिफरेंट है। मैंने कहा क्या? मैं कहा इफ़ यू आर नॉट इन योर रूम और यू नॉट यूजिंग योर रूम, somebody will use it. And I would, first few times I would come back and see somebody sitting in my room and I said, what's going on? And then they would just say thank you and leave. And then I would find किसी का calculator पड़ा है when I'm going around saying ये diary किसकी रह गई है, calculator किसका रह गया. But as I grew into it, I realized it's just efficient use of space. I mean, it's that open culture that we have. So it's extremely important that you create that environment जहाँ पे लोग खुल के बात कर सकें, कॉन्फिडेंस से कर सकें कि जिससे वो ऐसा नहीं होगा कि बदला निकाला जाएगा। रिटेलिएशन वही कहने लगा था कि वो कंपनीज में होती है एंटी रिटेलिएशन पॉलिसीज होती हैं, सो रिटेलिएशन नहीं होनी चाहिए। एंटी रिटेलिएशन पॉलिसी जैसा भी कुछ होता है। दिस फार्मा कंपनी आई यूज्ड टू वर्क फॉर, द ग्लोबल कंपनी, उसमें था, दे हैड इफ एनीबडी फेल्ट दैट बिकॉज ऑफ देयर feedback, somebody had retaliated against them or whatever, they could raise that to the global level, and then it will be investigated. Wow. So some companies take that very seriously. अरे पर retaliation बोल के थोड़ी आती है। The question is, देखिए ये तो जब आती है तब हैंडल करते हैं ना। आज जो जिधर हम खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, at least where I'm working right now, हम उस तक बात जाने नहीं देते। The feedback is there then and transparent, and so we are very clear. Mid-year है, वो है, I am told very clearly, and I tell my reports very clearly. This is the feedback that I'm getting for you. Can you tell me what happened or how did you handle it? Why is your behavior like this? And then usually, in most of the cases, they are one-offs. Let's be honest, and they are one-offs because people go through difficult times, not necessarily at work, but somebody is going through a tough time at home. So then you have to sit down and counsel them, "Yaar, don't bring it to work." We offer counseling services as well, by the way, हमारी organization में. So we try and support that person. Okay, fine. Do you need some time off? Do you think you can cope? You want to, just stay at home and handle if there's a personal situation, stay at home and handle it. Come back when you're better. So these options, you need to give them that comfort that we are still there for you. We are calling you out, but we want you to succeed. So if you want them to succeed, you have to help them through that process. So however we can help them without getting involved in their personal life because it's privacy, etc. You support them as much as you can, and then the more you support them, the more they get engaged with the company. I've had conversations with a lot of people who've been, you join, people leave, come and join. I've had a lot of conversations in the last 2 years with people who left us, and without fail, 90%, the first comment was, यहाँ पे एंग्रो वाला कल्चर नहीं है, वो ओपननेस नहीं है। 90% of the said it's not the same thing, मतलब in different ways. कहते हैं यार वो वाली बात नहीं है, ठीक है पैसे थोड़े बेहतर हैं, बट वो वाली बात नहीं है। तो इस तरह के कमेंट्स बहुत कॉमन है। So I hope that we can continue to create, support that environment. Of course, Engro has won the award for a reason. Of course, for a reason. Tell me, what are the non-negotiables for you in order to have somebody in your team कि मेरे साथ काम करना है तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
basically, I want people working with me to be very honest, to be upfront. If they try to be try to get something past me without giving me the full picture deliberately, I don't tolerate that. That's sort of a red line. You can do it once, but second time, it's a red line. Honesty. Honest. Yes. अच्छा, ऑल्सो टॉक टू मी अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. अभी आप मुझे बोल रहे थे मैं घर नहीं जा रहा, यहाँ से ऑफिस जाऊंगा. ऐसा क्यों है और बैलेंस आपके लिए क्या है? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस हम टर्मिनोलॉजी बहुत यूज करते हैं, बट आई थिंक देयर इज इट्स मोर अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, and it's sometimes it means different things for different people. For some people it means going home at 5. For some people it simply means the flexibility to be able to focus on deliverables rather than the timings. I think it's in Pakistan at least this is still maturing. I think there is a lot that needs to be done. For example, if somebody needs to work from home, we don't have a formal policy around it, but it is quite common in Angrod. If a colleague comes to me and says that, my babysitter's off for a week, can I work from home for a week? Sure, fine. It's not a problem. One colleague, she went through some medical procedure. She called in saying, I'm sick and bored. I need to do some work. Can I work from home? तो कोविड का एक ये पॉजिटिव है कि आई थिंक एवरीबडी वाज वेरी, इन पाकिस्तान एट लीस्ट, वाज वेरी स्केप्टिकल अबाउट वर्क फ्रॉम होम, बट दैट work from home concept and virtual meetings has really picked pace. There's still a bit of challenge because a lot of people think work from home is a day off. Well, it's not. And people tend to think of it that Yeah. way. That's why I say कि फिर आप वो बैलेंस, चेक एंड बैलेंस कैसे रखेंगे अगर आप वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लेट्स से कर भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, अलाउ भी कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे हैं, बट कुछ लोग करेंगे भी, बट फिर कुछ मिसयूज भी करेंगे. देखिए, दैट्स अगेन अ कांस्टेंट, वो एक तरह का कांस्टेंट स्ट्रगल थोड़ी सी होती है. इसी कुछ लोग होते हैं जो, आई हैव नोन पीपल जो अगर 9 बजे टाइम है तो 9:15 आएंगे, आपके अच्छा 9:30 कर देते हैं तो 9:45 आएंगे. मतलब एक हैबिचुअल भी होता है. वहाँ आपको थोड़ा सा कहीं पे कुछ जगहों पे आपको यू नीड टू पुट योर फुट डाउन, से यार सम डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड. If you need to have a meeting, and I'm a firm believer that virtual meeting is not a substitute for a face-to-face meeting. It is not, because it is Absolutely. very different, हाँ. and it can be a backup, हाँ. but it's not a substitute. बिल्कुल. Because even in interviews, हाँ. we use virtual interviews, but only if there's if somebody's sitting in the US and I need to interview them, then there's no point hauling them here just for an interview. But eventually we get everybody in the office. I mean, in my case, I was in Australia when I was being interviewed. I had my interviews, but my then boss said, I want to meet him face to face. They flew me all the way to Pakistan and physically met everybody again. इसकी बात ही अलग होती है. They said, fine. That's the final one. Is I still need to see that person face to face, meet him, talk to him. अच्छा, आपका तो ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट भी ठीक चल रहा होगा. पाकिस्तान, यहाँ तो इंटरनेट का इतना प्रॉब्लम, कभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम है. आप किसी के साथ इंटरव्यू, मेरे ऑनलाइन इंटरव्यूज में एचआर को मना ही कर दी कि आप बात कर रहे हैं, अच्छा मेरा इंटरनेट अच्छा चल रहा है, जरूरी सामने वाले का भी चले, बीच में बंद हुए जा रहा है, आवाज नहीं आ रही, कभी कुछ मैंने कहा नहीं, यही होगा, पता ही नहीं चल रहा है. और वाइब, और ऑल्सो यू जज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, इमोशंस, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें जूम पे इतना नहीं पता चलती. Zoom पे नहीं हो सकता. It's as I said, it's a backup. Yeah. If face to face doesn't work, then fine, but it's not a substitute. बिल्कुल नहीं. Okay. Talk to me about self doubt. So हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात की. Were you ever insecure during this journey, or maybe early life, early career stage पर, और आपको
आप किसी ऐसे रूम में जहाँ बहुत कॉन्फिडेंट, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल या आपसे ज़्यादा रिच लोग मौजूद हैं और आप समवेयर इनसिक्योर हुए हों, अर्ली करियर स्टेज पे भी हो सकता है, या आप कहेंगे कि नहीं मैं तो हमेशा से बड़ा सिक्योर और कॉन्फिडेंट रहा हूँ, क्या ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो आपने वो कॉन्फिडेंस की जर्नी कैसे तय की थी? आई थिंक कोई भी अगर कहेगा कि वो हमेशा से कॉन्फिडेंट था तो दैट वुड बी फार फ्रॉम द ट्रूथ. My first degree was in economics, but second degree was in IT. So when I came back from the UK after studying IT, I joined ICI in an IT department. I was in IT for 2 years, and they moved me to sales in Lahore. Moved me from here to Lahore and said, "आप ये sales करेंगे." And the team that was reporting to me was twice my age, had more experience. मतलब जितना मेरी उम्र थी उतना उनके experience थे. हाँ. And it was a time where I said, am I in the right role? And I kept telling my boss and my HR at the time, also became my boss at some the gentleman later. I said, are you sure you want to move me to this role? They said, no, we are confident you can do this. अच्छा. So that helped me. Wow. I did have a lot of self doubt. I said, I don't know. I am not the sort of person who can go and sell something to somebody. It's very difficult. But somehow I managed, and Alhamdulillah, did What well. will be the tips अगर कोई ऐसा बंदा आपको देख रहा है जिसके सेल्फ डाउट का है मसला, उसको क्या टिप देंगे आप? You need support. It can be from your boss, some mentor at work who will help you, guide you. If you're in a good organization, they will have that covered. If they're putting you into a new role, I started my work life in the 90s, but the first time I moved into HR was 2004. And I asked my CEO, I said, what are you doing? Are you sure? I mean, I'm the one who's always talking about what is HR doing, Notice निकलता है, मैं पूछता हूँ ये अच्छा भला तो ये डिपार्टमेंट चल रहा था, ये उखाड़ पिछाड़ क्यों कर दी, इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो. तो मैंने कहा यही तो चीजें समझाने के लिए तुम्हें भेज रहे हैं यहाँ पे. So anyway, when I did join, then I realized that and yes, I had self doubt in the sense that can I do this role or not, and it was straight ahead of HR role at one of the businesses. So I had a lot of apprehension, but my boss kept saying, "मुझे पता है तू कर लेगा, तुम कर लोगे." तू कर लेगा." And I think a lot of credit to the boss for giving me that space to learn, and me, I had to learn and understand that when you're in sales, things are more, right now. हाँ. सेल हुई नहीं हुई, डील हुई नहीं, रोज रात शाम को बैठ के हिसाब हो रहा है कितनी सेल हो गई, कितना वॉल्यूम हो गया. But you're in HR, you're talking about long term. You're talking about a year, 2 years, 3 years, 4 years down the road. आप सेल्स में से HR में क्यों आए? बीच में मैं सप्लाई चेन में भी गया था, by the way. ICI had this concept where they would give every management trainee exposure to obviously the different businesses in ICI, and this is that cradle to the grave conversation that we were having earlier. Because वो लॉन्ग टर्म सोचते थे उस वक्त सारी कंपनीज लॉन्ग टर्म सोचती थी. कहती थी यार इस बंदे को इवेंचुअली जनरल मैनेजर बनाना है, तो इसको जितने हमारे बिजनेस में कम से कम 2 का अच्छी तरह आना चाहिए. सही है. और अपने फंक्शन से हट के भी इसको 1 या 2 फंक्शन आने चाहिए. अच्छा. So if you are in X function or if you're in the commercial side, they will put you in supply chain, they will put you in marketing, they will put you in sales. Wow. To test you out. So when you inshallah become a general manager, so you've got the sales guy reporting to you, you've got the marketing guy reporting to you, you've got the finance guy. Hopefully some of them can't take you for a ride. So you at least need to understand 1 or 2 of the other functions other than your own, so that you can run a business better. Also, is it about the entrepreneurial drive? Because I feel कि जिसमें entrepreneurial drive होती है वो different areas में अच्छा perform कर जाता है. So for example, अगर let's say आप sales के हैं और आपको HR में place किया गया, so you won't be like कि यार ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो मेरी JD नहीं है, इसका तो मुझे तजुर्बा नहीं है. You have this entrepreneurial drive where you actually just put yourself into this particular department और आप explore करना शुरू करते हैं और आप ownership लेते हैं और आप opportunity avail करते हैं और without being dependent on anybody you just solve problems like this. So do you feel this is the entrepreneurial drive that makes anybody successful in any department? I think we have a different word for it in HR. Okay. This kind of people are high potentials.
IPOs जिसे हम कहते हैं, Okay. या टॉप टैलेंट क्या है, जो भी कहें, ठीक है. who are in organizations. Most organizations used to have it, and most still do. Hypo programs where they identify people who are going to be long-term leaders, and then they work on them accordingly. What you've described is not just an entrepreneurial person; it's somebody who is able to develop themselves. If developed right, would become a leader in the organization. So wherever they go, they have the right framework to, even if they don't know the function, they're able to work with the people there and deliver. When I moved to sales, I learned from my team. I said, "Yeah, अब सिखाओ मुझे तो नहीं आता." तो वो literally बैठ के अलिफ बे से मुझे सिखाते थे. But for that, you need to have that relationship. So tell me, what is that one thing you do differently? Because of course, Engro has won the award also, right? And I'm sure आप Engro में ऐसे initiatives ले रहे होंगे जो लोगों की development के लिए होंगे, personal professional development के लिए. So talk to me about one different initiative that Engro has taken for their employees. I think in this, I would say, I would confidently say that Engro is unique right now in the market. What we're saying is that we help people develop functionally and professionally, but we also help them develop their character. Character, okay. And when we talk about character, it is not just about having the right set of values, but it is about exhibiting them and leading from the front. Okay. So when we talk about character, we take lead from Huzur Salam's saying that the best among you is the one who has the best character. This also chimes in with what we were saying, talking about earlier, the how part. हमारे यहाँ जो हमने एक कॉन्टेक्स्ट लॉन्च किया है लास्ट ईयर, वी कॉल इट कैरेक्टर इन गुड मैनर्स. Character in good manners. Okay. CGM for short. सही है. We call it a frame of reference. So if I'm taking any decision or taking any call, I put that cap on, and that's the frame of reference I use. And 100% of the time, it makes my decision a lot easier. The principles उसके 5 हैं, which we call THIS. TTHIS: truth, trust, humility, integrity, and sabr, or we also call it striving in times of hardship. We've made that part of our culture. We've made that part of our values. We've trained people on it in terms of what it means. It's embedded in our performance management. So जब हम competencies की बात करते हैं, उसमें we also recognize these character elements. So whenever somebody is assessed at mid-year or the year end, if they've done well, something exceptional on the character side, it is recognized. And I gave you an example of somebody, raising their hands and saying, I made this mistake. It shows character. They're being honest. They're being transparent. This is essentially an initiative by our chairman, Hussain Dawood, where he said, functionally and professionally, everybody develops people, but we want to help them develop their character as well. So that we create, the company is the microcosm where we have some control. So if we can help people improve their character and help them on their journey, imagine the ripple effect. They would take that home, they would take that wherever they go. We've got, we work with the KSBL. It is a part of the Dawood Foundation. KSBL is created a center of excellence on this, where they're taking this to other organizations. They're taking this to schools. They're taking this to other institutions. So the idea is to help improve the work environment to the extent that, and it's a very good example that is often quoted in Engro, if you're in a meeting and you don't have to, you can take people at face value. You don't have to wonder, this person said this, what's really behind it. If they're speaking their mind and they're being honest, you don't have to, there's no guessing game. So imagine the meetings become shorter, the decisions become quicker,
So the terminology we use is that character and good manners is commercially divine. I mean, it just makes the job easier. Um, the next stage that we are at right now is we've operationalized it, we've put it in our system, but how do we ensure that the spirit of this concept is retained, sustained, and grows over time? The single most important thing, and we've as an organization, as a group, we've consulted with what's called the Oxford Character Project. Oxford Acha. University has a character project. Acha. Cambridge has an Islamic initiative, and several other global experts who worked on this. Interestingly, the Oxford Character Project started where they felt that they're producing the leaders of the world who become prime ministers and presidents, but they do a lot of things which are suspect, which show a lack of character, for lack of a better word, right now. So they said, okay, fine, what are we missing? हमने फंक्शनली और एकेडमिकली इनको तैयार कर दिया है, हम कुछ चीज़ मिस कर गए हैं. So they started working on a character project. So they have a lot of they started I think in 2016, and they've done a lot of research on this as well. So we've used all these sources, and the next challenge, what we want to do is how do we retain that spirit within the organization? How do we sustain it going forward? So if one person is leading this effort, it should be ingrained in the organization enough that that person is not there, it still carries on, it doesn't die away. So this sustaining that part is the next big challenge for us. So what we're doing is the simplest and the most effective way of imbibing it and sustaining it is to walk the talk. The leaders have to walk the talk. They have to exhibit the behaviors that are in line with these principles in terms of character, in terms of honesty, truthfulness, transparency, integrity, and all these principles. And if they are not aligned, then it won't fly. You see, leadership behavior is infectious. Of course. It's infectious. Agreed. Yeah. So if a leader behaves in a certain way, his team literally copies. I mean, one of the organizations I worked for, the CEO bought a classic car. His entire team started looking for classic cars and buying them and restoring them, and got into that game. Acha. So I always quote this example because leadership behavior is infectious. So if it is in line with character and good manners, then people will follow that lead. Okay, it was wonderful having you. I really Thank you so enjoyed. Is there a last piece of advice or one piece of advice that you want to share before leaving or before closing the podcast for young professionals who are watching you? Never forget that when you're starting out, there's a massive learning curve. Focus on what you're learning and be clear in terms of what you want from your professional life. Set your goals, 3-year goals, 4-year goals, 5-year goals, but work towards them and make sure you never stop learning. The day you stop learning is the day you stop growing. Simple as that. And in this day and age where technology is, changing at a very fast pace with AI and everything, even, oldies like me need to get with the program, and you need to do this. Lovely. So never stop learning. The day you stop learning is the day you stop growing. Wonderful. Thank you so much for being with us. Thank you for having me.